Good evening, friends. Sorry for the delay. There was a technical glitch on this. Right. Anyways, today we are going to discuss the next essay over here, which is when two elephants fight, it is the grass that gets trampled. हिंदी में जब दो हाथी लड़ते हैं तब घास ही रौंद दी जाती है. So today we are going to have discussion on this part with various angles. मैं हमेशा सब लोगों को बोलता हूँ whenever you are writing a essay, make sure that you follow a pattern, a structure. That structure is called as thesis, and you look at the antithesis, and then you combine both of them and form a synthesis. मैं हमेशा सब लोगों को बोलता हूँ that it's always better कि आपके पास whenever you are writing the answer, आपके पास multiple layers होनी चाहिए. Wait, follow the structure and use the structure every time you attempt a question. So let us start with the obvious. So let's start with the obvious. ये बहुत ही simple सा लाइन आप समझ सकते हो और यू कैन स्टार्ट एंगल ऑन दिस पार्ट. इसको आप फिलोसॉफिकल एंगल पे कर सकते हो. यू कैन एक्चुअली यूटिलाइज दिस इन टर्म्स ऑफ फिलोसफी. यू कैन यूटिलाइज दिस सेम स्टेटमेंट इन द फंक्शन ऑफ जियोपॉलिटिक्स. आप इसी को यूटिलाइज कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स. यू कैन यूटिलाइज दिस स्टेटमेंट इन द फॉर्म ऑफ इकोनॉमी. You can use this also in case of sociology or a social behavior, and we will deal with all of this obvious. So अगर तुम इस क्वेश्चन को केवल फिलॉसफी के फॉर्म में कर रहे हो, then you are asking the wrong question. So you are absolutely in the wrong footing. You are not going to be able to attempt, and you are not being able to give a wholesome answer to this question. Let me explain this to you in simple terms. सो अगर मैं इसको सिंपल एक्सप्लेनेशन में बोलूं तो हम कबीर से स्टार्ट कर सकते हैं फिलोसॉफिकल एंगल में. ओके, तो चलती चक्की देख के दया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई. वेरी फेमस. हम लोगों ने ये कबीर के दोहे बचपन से पढ़ रहे हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं. यू कैन एक्चुअली स्टार्ट दिस, एंड दिस इज एन ऑब्वियस इंटरप्रिटेशन ऑफ दीज स्टेटमेंट्स. बड़े आराम से तुमको समझ में आ जाएगा. सिमिलरली अगर तुम थोड़ा सा इंटरनेशनली या थोड़ा सा इंग्लिश लिटरेचर में जाना चाहते हो तो यू कैन ऑलवेज से बिटवीन टू ग्राइंडिंग स्टोन्स नथिंग सर्वाइव्स होल. तुम दोनों में कर सकते हो. दो पत्थर के बीच में कुछ भी सर्वाइव नहीं करेगा एज अ होल. टूट जाएगा, रौंद दिया जाएगा. सिंपल. बट दिस इज ओनली वन पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. Thus there are multiple angles which you can draw from this. So you can draw several parallels from one statement and try and understand. Now figure out in terms of geopolitics, figure out कि ऐसा कहां होगा कि where the two giants collide और जो बाकी ग्रास है they start suffering. So very obvious, समझने की कोशिश करो that when it is very obvious and a very straightforward interpretation which is going in one direction, that is the first premise, उसको बोला जाता है thesis. So you make a first statement, बहुत ही obvious है. Okay, let's say US and China के बीच में ट्रेड वॉर हो रहा है. Clearly, so US और चाइना के बीच में ट्रेड वॉर हो रहा है. Both of these countries are trying to outsmart one another. Both of them are playing tariff games, which Donald Trump is doing. China is going to have a counterfire. What will happen because of this? The world economy is going south. Everything is bad. The economies of smaller countries. When I say smaller countries, we are referring to grass. Smaller countries are now going to be in trouble. इतना inflation वो tolerate नहीं कर सकते. So all of them will be somehow, some way, they will have to compensate. They will be trampled. This is a thesis. This is how you make the first thesis. So आप thesis बना सकते हो. So as I said, always start with a thesis. That's how you play. That is how lawyering is done. That is how advocacy is done. That is how arguments are made. That is how discussion should be done. Thesis is हम proxy war से start कर सकते हैं, trade war से start कर सकते हैं. It is always the first big damage is always with the weak people. So ये कहीं पर भी चल सकता है. But for the sake of argument today, let us understand कि क्या ये सच होता है. This cannot be overstated कि सच में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तो वीक कंट्रीज और वीक स्टेट्स की होगी. सो ग्रेट पावर राइवलरी का आप मेंशन कर सकते हो. You can start talking about tariff wars. You can start, and in fact, why not only, why do you stop here? Let's go back to the Cold War era. कितनी countries की regime changes हुई just because of this power rivalry between US
and the erstwhile USSR. You can take this and this would be a very good angle. But you have to be very careful. Whenever you are writing an essay answer, so you should have a very layered answer because there has to be multiple dimensions which you have to look after. So you should not stop at merely thesis, and you should also start functioning on, you should also start functioning on giving other angles. So ye ek ho gaya. Now let's look at the next angle. Next is, we'll counter this, and that is antithesis. All right. Antithesis is, ye kahan likha hai? Where is it written? Is this a rule? Is it etched in stone? Is there a law carved in stone कि the grass cannot behave in any other way, कि grass किसी और तरीके से भी behave कर सकती है? क्या ऐसा हो सकता है कि grass अब passive ना रहे, grass अपने आप को protect कर ले, किसी ना किसी तरह से protect कर ले, and we'll discuss कि किस किस तरह से आप protect कर सकते हो. Let's try and understand. So, can we organize ourselves? Can we have an example of ASEAN? Can we have an example of ASEAN? ASEAN was small countries, very small countries, Southeast Asian countries. They decided to come together. They followed the formula, what is called as the ASEAN way. That is the formula of Mashwara and Mufakat. In other words, we will do everything with consensus. हम लोग छोटी countries है, but if we come together, we become a huge economy. And today ASEAN is absolutely correctly on this part. Can we also see one more thing? Can we also see that multi-alignment comes into the picture here, like India is doing? We are aligning. हमें oil की जरूरत थी. Recently, after the Iran war or during the Iran war, we were not getting oil from Russia, but we sourced oil and gas from 30 different countries. किसी भी तरह से हमारी requirements पूरी हुई. Can we say that the grass has decided to multi-align? So please understand, you are still in the era of writing an essay, but you are still going into technical dimensions of multi-alignment, multilateralism, strategic alignment, strategic autonomy, consensus building. All of these terms can come over here. तो ग्रास को कहीं नहीं लिखा है कि ऐसा कोई नियम नहीं है that the grass has to suffer. So you created a thesis and then you impress the examiner that there is an antithesis also possible. We can look at this world in some other direction also. So yes, if you have two giants colliding, then the weak will always suffer. In fact, why not connect this to Thucydides trap? Very recently, when the US government, the Donald Trump, they decided to visit China, at that stage, Xi Jinping used this term exactly, that you should be very aware or beware of Thucydides trap. What is Thucydides trap? Thucydides trap is the strong do what they can, while the weak endure what they must. In other words, weak हमेशा मारे जाते हैं, strong हमेशा चढ़ते हैं. That's an entirely thing. Strong हमेशा वो करते हैं जो उनको करना होता है. And there is much truth to that, 100%. लेकिन what is the case कि grass decides कि हम लोग को ये करना है. Now combine the two. तो मैंने क्या किया? So we have a thesis and we have an antithesis और इसको combine करो. Now the point यहाँ पर ये कि grass क्या करेगा? What is the choice that the grass makes? This is going to decide what will ultimately happen to the grass. Please pay attention. Listen to me very carefully. ऐसे का जो लाइन है, the premise है वो ये है, when two elephants fight, grass gets trampled. मैं उसके साथ अग्री कर रहा हूं, this is called thesis, but I am also giving an antithesis that sometimes grass may not get trampled, नहीं बर्बाद होगा. तो synthesis क्या होगा? दोनों की combination कि grass बर्बाद होगा या नहीं होगा. Will the grass get trampled or not depends upon the actions taken by the grass, the choices made by grass, and there is much truth to it. मेरे साथ क्या होगा is a function of two things. One, the circumstances surrounding me, and number two, the choices that I decide to exercise. So the point here is, synthesis says whether grass is trampled or grows depends upon the institutions
coalitions as well as options. It's an amazing way of writing an essay and an amazing way in which you will try and understand, and in fact the examiner gets much impressed. ये हो गया जियोपॉलिटिकल. मैंने अभी तक ना जियोपॉलिटिकल एग्जाम्पल लिया, ना मैंने अभी तक फैमिली का एग्जाम्पल लिया, ना मैंने सोसाइटी का एग्जाम्पल लिया. फॉर नाउ आई हैव ओनली डिसाइडेड द स्ट्रक्चर कि मैं एक थीसिस लूंगा, एक एंटीथीसिस और एक सिंथेसिस करूंगा. लेट्स गेट इनटू द पिक्चर. सो लेट्स लुक एट द स्मॉलेस्ट एलिमेंट. टॉक अबाउट अ फैमिली. लेट्स टॉक अबाउट अ फैमिली. सो फैमिली में जब हस्बैंड और वाइफ की, पेरेंट्स में, ओके, हस्बैंड और वाइफ के बीच में डिवोर्स प्रोसीडिंग्स होती है, राइट? सो क्या प्रॉब्लम सिर्फ हस्बैंड और वाइफ की हो रही है, या यानी कि जो एडल्ट्स है उनकी हो रही है? वेल, आई वुड क्वेश्चन दैट प्रेमिस. इनफैक्ट फैमिली कोर्ट्स में अब ये बहुत बार हो गया. इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट हैज रेज्ड दिस पॉइंट इन सेवरल पॉइंट कि एक्चुअली व्हेन देयर इज अ divorce proceeding happening or there is a separate, things are all going south, उस टाइम पर the real victims are children. अब children को क्या बना देंगे? सब पेरेंट्स अगर इसमें जायंट्स माने जाएंगे, एलिफेंट्स माने जाएंगे, तो चिल्ड्रन माने जाएंगे ग्रास. उसी तरह से सो पेरेंटल कॉन्फ्लिक्ट, हु इज द मेजर प्रॉब्लम? द मेजर प्रॉब्लम इज द चाइल्ड. और हु इज फेसिंग द मेजर प्रॉब्लम? इट इज द चाइल्ड. What a beautiful example, exactly matches the statement. So this is one example of everything. So strip away the rhetoric, बाकी सब बातें छोड़ दो, हो गया. हमने एक दोहा भी लिख दिया, हमने वो भी बना दिया. Now start explaining to the examiner कि हमको समझ में आ गया है कि जब giants कोलाइड करते हैं तो who's the grass. उसी तरह से sibling rivalry, okay, you will see this part. तो हम लोगों ने क्या कर दिया? हमने उसका स्केल डिसाइड कर दिया. तो यू स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक यूनिट. एक फैमिली से स्टार्ट करो. लेट्स स्टार्ट बिल्डिंग इट अप ऑल द वे अप टू जियोपॉलिटिकल एंड द वर्ल्ड सिनेरियो. तो अभी हमने एक फैमिली का एग्जांपल लिया. इट्स एन अमेजिंग एग्जांपल, यू कैन टेक दिस. फिर उसके बाद तुम डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में आ जाओ. ओके, तुम्हें भी मालूम है ये बड़ा कॉमनली किया जाता है, ओके, जिसको इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में बोला जाता है सामने वाले को बिठा दिया गया. इन अदर वर्ड्स, सामने वाले को हैज बीन आस्क्ड टू सिट डाउन और विड्रॉ. क्या किया जाता है? एक बड़ी पार्टी है, एक और बड़ी पार्टी है, राइट? दो बड़ी पार्टीज के बीच में इलेक्टोरल पॉलिटिक्स हो रहे हैं. इससे पहले कि ये सिचुएशन हो जाए कि और, बिकॉज हमारे पास कैंडिडेट्स की तो कोई लिमिट नहीं हो सकती, कितनी छोटी पार्टीज एज वेल एज इंडिविजुअल्स हु आर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी कॉन्टेस्ट कर सकते हैं. तो उसको वोट काटने का कॉन्सेप्ट बोला जाता है. तो ऐसे टाइम पर क्या किया जाता है? सो द पॉइंट हियर इज, लार्ज पार्टीज जो छोटे छोटे कैंडिडेट्स है उनको उठा देते, बोलते हैं जाओ ताकि सामने वाले का वोट काट दिया जाए. नाउ इन अदर वे, ये एक्चुअली ट्रू स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी के खिलाफ जा रहा है. सो जो छोटा कैंडिडेट है, ही प्रैक्टिकली हैज नो चांस टू सर्वाइव इन दिस जायंट पॉलिटिकल बैटल. कैन वी ऑल्सो इंक्रीज दिस टू पॉलिटी? थोड़ा सा लेवल और बढ़ाए. वन मोर एग्जाम्पल. कैन वी से कि सेंटर और स्टेट के बीच में डिस्प्यूट हो रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द वन हैंड एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑन द अदर हैंड. सफर कौन करेगा? सफर करेगा वो जो एक्चुअली लास्ट में एंड डिलीवरी सिस्टम होता है, वो जो लोकल गवर्नमेंट होगी, वो जो वहां पर जो डेवलपमेंट होना है, जो पब्लिक सर्विसेज जाना है, वो पहुंचेगी नहीं. तो डिस्प्यूट किसके बीच में? डिस्प्यूट है सेंटर गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट. टू बिग एलिफेंट्स. हु इज गेटिंग ट्रैम्पल्ड? ग्रास. वन मोर एग्जाम्पल. अगेन थीसिस, अगेन एंटीथीसिस एंड सिंथेसिस. लेकिन क्या ग्रास इसमें कुछ और फैसला कर सकता है? यस, बिल्कुल कर सकता है. सिविक सोसाइटी बन सकती है, ओके, मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जा सकती है, एनजीओ चलाए जा सकते हैं, पीआईएल्स किया जा सकता है. सो यस, देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू एलिफेंट्स, बट क्या ग्रास का सफर करना लिखित है? इज इट डिस्टिंक्ट? इट इज इम्पॉसिबल कि इसके बारे में कुछ और हो सकता है? वेल, सर्टनली नॉट. I would certainly question that premise because there are hundreds of ways in which वो ग्रास अपने आप को ऑर्गेनाइज कर सकती है. एंड दिस इज समटाइम्स थॉट इन गवर्नेंस ऑल्सो कि हम लोग सिविक सोसाइटी ग्रुप्स बना सकते हैं, एनजीओस बना सकते हैं, वॉलंटरी ग्रुप्स बना सकते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बना सकते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस कर सकते हैं. ऑल दैट डिपेंड्स अपॉन योर चॉइस. सो थीसिस, एंटीथीसिस, सिंथेसिस. हमने स्केल डिसाइड किया है. हमने फैमिली किया, फैमिली के बाद हमने डोमेस्टिक पॉलिटिक्स किया. नाउ वी हैव आल्सो सीन एट नेशनल पॉलिटिक्स. ओके,
तो ऐसा थोड़ा ना कि यहाँ पे खत्म ही हो जाता है. लेट्स कंपेयर दिस. व्हाई नॉट? मैं अपना सब्जेक्ट में क्यों रखूं? लेट्स टेक इट टू इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी. दो बड़े बड़े जायंट्स है, राइट? दो क्या, तीन हो सकते हैं. इट कैन बी जायंट्स. दे हैव फंडेड बाय बिलियंस ऑफ डॉलर्स. वो तुम्हारे घर पे डिलीवरी करा रहे हैं प्रोडक्ट्स की, ग्रोसरी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, शॉपिंग तुम अब ऑनलाइन कर रहे, विदाउट नेमिंग एनीवन फॉर ऑब्वियसली. सो लेकिन उनके पास इतना पैसा है, इतना फंडिंग है, दे आर एलिफेंट्स इन द ट्रूएस्ट सेंस दैट दे कैन टेक दैट शॉक. वो आपको डिस्काउंट दे सकते हैं. दे कैन गिव यू डिस्काउंट, दे कैन गिव यू प्रोडक्ट्स एट अ चीपर कॉस्ट, एंड दे कैन गिव यू डिलीवरीज इन मिनट्स. कर सकते हैं. तो इसमें सफर कौन करेगा? इसमें सफर करेंगे किराना स्टोर्स, द लोकल ग्रोसरी स्टोर्स. तो कौन हो गया फिर से? सर जो फंडेड है वो एलिफेंट्स हो गए, जो किराना स्टोर हो गए वो ग्रास हो गया. सो थीसिस, एंटीथीसिस. ग्रास डिसाइड्स ना, मैं नहीं हारूंगा. आई विल नॉट डू दिस, आई विल नॉट लेट इट हैपन. सो व्हाट कैन यू डू? कोऑपरेटिव सोसाइटीज बना दो. टुगेदर बिकम बिग. अमूल बन जाओ. Alright, so you become big by joining hands together. So once you decide to become stronger by association, जो कि तुम्हें allowed है, why not? So you will be able to compete against these two elephants. Thesis, antithesis, synthesis. You are not only impressing the examiner by the vast plethora of examples that you are giving, but also by deciding the scale of it. You started with family, you're going to domestic politics, you're connecting it to national politics and also to economy. Why not take this to geopolitics? Let's take it to the highest order possible. Let's take it to Cold War, all right, or the Russia-Ukraine war, or why not take it to US-China tariff war? You can take all of these examples. It is because of the US-China tariff war that the entire world's economy is facing such kind of shenanigans that we are watching all the way. So why is all of these things happening? These things are happening because two elephants are colliding. And what is happening? Because of which the grass is suffering. Who's the grass? Smaller economies, smaller countries who do not have that much of leverage in terms of dollars and in terms of money and in terms of gold reserves and in terms of petroleum reserves, and that is where we are now going to get trapped. So grass suffer ही करेगा क्या? Promise है क्या? No. There is an antithesis. Grass decides to form ASEAN. Grass decides to do alignment. And once you do alignment, right? So I'll just give you examples. So we can say we will refuse the field. Non-aligned movement. So we are not going to fight these wars. We are not these two elephants. In fact, Jawaharlal Nehru's statement was very clear. If you read non-aligned movement, the entire discussion, it was very clearly mentioned by Jawaharlal Nehru as that we have nothing to do with others' war, quote unquote. Jawaharlal Nehru, he said, we have nothing to do with others' wars. Others means let US and USSR, they have beef with one another, let them fight. But we will not do this. So yes, we were starting with the obvious that what is the obvious statement? Obvious statement is when two elephants will fight, then the grass will get trampled. This is obvious. But this certainly cannot be overstated 100%. But is there any other truth possible? Is there any other challenge to this premise possible? And my answer is yes. So yes, non-aligned movement was a classical example. And that is why it was at that time something revolutionary. So much so that it propelled Jawaharlal Nehru to the height of international fame. Why? Because this was new. Also, careful distance. Like for example, Bangladesh maintained careful distance between India and Pakistan with what is called as during the process of Operation Sindoor. So Operation Sindoor, they didn't get involved. We are not getting involved. Third, a very important way is ASEAN. Let's join together. Why not? Let's join the hands together. So ASEAN is a classical example of aggregation of our efforts. Mashwara and Mufakat. As in, हम लोग combine करेंगे. In fact, and then we will fight and contest with the elephant. तो यहाँ पे ग्रास ने क्या किया? Grass decides कि I will not be trampled. I will not be destroyed. I will take some other option. Also, India, classical example, multi-alignment. What is Dr. Jaishankar's statement? We are in the phase of what is called as strategic autonomy. We will do whatever is good for us. The area, we are not going to form an alliance just based upon ideology. We will have interest-based alignment. What is the word? Interest-based alignment.
So this cannot be overstated that India needs help from various quarters. सिर्फ एक ही alliance का काम नहीं होने वाला, और उससे कभी कभी फायदा भी हो जाता है. फायदा? Yes. So sometimes what happens, let's say the two elephants are colliding, they are fighting with one another. So, but the world needs supplies, world needs resources, world needs services. क्या पता है इसका फायदा क्या हो जाए, that the world thinks, why not go and buy from India? Why not establish a factory in India? Why not take services from Indians? That is also an advantage. इसको collateral damage बोलते हैं. And sometimes it is not the grass that is suffering, even the elephants may suffer from collateral damage. So there is much wisdom in this, and you can actually argue on this point that yes, thesis is there in most cases, obvious answer, but there is an antithesis, and it is left to the grass to take a particular choice to understand synthesis. Amazing way you can combine this answer into variety of ways. So this is how you can write an answer, and it will be a wholesome answer. It will be a multifaceted answer. You will be touching upon several bases and you will be scaling it up. Examiner को हमेशा बहुत अच्छा लगता है अगर you scale it up. You start from the basic very small unit all the way going to up. और ये multi-dimensional answer होना चाहिए. Single layered answer is not expected and not accepted. So this is how you do this answer, and that's the entire content. So you look at way forward. कि हम लोग trampled होंगे या growing होंगे. Can we continue? Yes. Elephants have their place in the nature, no doubt about it. Yeah, they are two giants. हो गया, yeah, they are fighting. But क्या grass matters? Certainly, because grass के पास वो है which elephants do not possess. So one may argue that grass has roots. Grass forms the system. China cannot fight a war with US, and US cannot fight a war with China in the absence of a system which is formed by the grass. हम जो छोटी छोटी कंट्रीज है या छोटी इकोनॉमीज है उनकी वजह से ये सिस्टम चल रहा है. दे आर फाइटिंग इन दिस वेरी सिस्टम विच वी हैव क्रिएटेड. तो द ग्रास हैज टू रियलाइज कि हमारा क्या सिस्टम है. वी आर फॉर्मिंग द सिस्टम, वी हैव रूट्स. दो एलिफेंट्स लड़ेंगे, दे मे डाई, one of them may die, or both of them will die, or both of them will get injured. Even grass will get injured, but grass के पास है roots. Grass will reform. Why? Because हमसे ही ये दुनिया है. We are running this show. So you can say out of the 200 odd countries in this world, दो लोग fight कर रहे, but those 198 are providing the system. उसी तरह से अगर आप the two giants को इकोनॉमी में भी देख लो. फॉर इंस्टेंस अगर आप ऐसा देख लो कि यार ये दो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स है जहां पर ग्रोसरीज आ रही है एंड ऑल दैट स्टफ, बट एक्चुअली व्हेन आई नीड फूड, व्हेन आई नीड ग्रोसरी, व्हेन देयर इज क्राइसिस, actually I trust my local grocery store because they are running the show. So the idea is grass has to recognize, you have to form concept of multilateralism. So please understand, it is all that you have to do, but everything is dependent upon choices. So you have to give some justification कि ग्रास अपने आप से नहीं सर्वाइव करेगा. You will have to start with something. So again I am telling you, if you say कि ग्रास अपने आप सर्वाइव कर देगा, we are asking the wrong question. Let's try and understand. So इंडिया को फॉरेक्स रिजर्व्स बनाना पड़ेगा. All small countries, food energy stockpiles होगा, social protection होगा. We'll have to look after the laws and the policies should be such that we protect ourselves. Atmanirbhar Bharat is a step in that direction. Make in India is a step in that direction. You protect your reserves, multi-alignment, multilateralism. Why are we doing it? To absorb future shocks. These are buffer mechanisms, and that is what we have to do in case of formation. So what will conclusion on this part? Grass has what elephants do not. They have roots. Trampled grass will regrow. Empires will pass away. What a beautiful way. So हमने start यहाँ से किया था, and we flipped the entire question twice over, and we came back that there is still hope. So there is no, this is not a doomsday declaration that when two elephants will fight, grass खत्म ही हो जाएगा. ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ. It is always thesis, antithesis, and synthesis. So I think I explained it to you, and you can utilize this kind of thing. कभी भी एक ही एंगल पर don't think on this part. Always flip the question, always invert the question, and answer always possible. Thesis,
antithesis, and synthesis. I hope you have understood. We're going to continue with this discussion. The live session continues. I hope you are satisfied and you have found some useful tips from this discussion of question number 4. Let's try and understand with the following.